Hello everyone. Today we are back with another topic of comparative criminal procedure, which is the hierarchy of court structure of China and their judicial system. So now we are going to have a detailed study about the judicial system of China. The judicial branch is one of the three branches of government in People Republic of China, along with the executive and legislative branches. Strictly speaking, it refers to the activities of People's Court system. The Chinese court system is based on civil law modeled after the legal systems of Germany and France, but with the local characteristics. Constitutionally, the court system is intended to exercise judicial power independently and free of interference from administrative organs, public organizations, and individuals. Yet, the Constitution simultaneously emphasizes the principle of the leadership of Communist Party, as stated by the former SPC President Zhao Yang in 2007. The power of the courts to adjudicate independently doesn't mean at all independence from the party. It is the opposite, the embodiment of the high degree of responsibility vis-a-vis party undertakings. Talking about the court system in China, there is on the very top it is a Supreme People's Court. तो सबसे शीर्ष कोर्ट जो है वो सुप्रीम पीपल कोर्ट कहलाता है चाइना में. द सुप्रीम पीपल कोर्ट एट द हाईएस्ट जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द स्टेट हैज़ 4 प्राइमरी फंक्शंस. तो सुप्रीम कोर्ट के 4 प्राइमरी फंक्शंस हैं. द फर्स्ट इज़ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, द सेकेंड इज़ एजुडिकेशन, थर्ड बीइंग लेजिस्लेशन, and the fourth is the administration of judiciary. On the second place is Higher People's Court. Each province, directly administered city, and autonomous region has a Higher People's Court. Higher courts hear certain first instance and appellate cases involving civil, administrative, and criminal matters, and the jurisdiction over certain other matters. तो हायर पीपल कोर्ट्स में ईच ऑफ द प्रोविंस या फिर जो डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेड सिटीज़ हैं चाइना के, या फिर जो ऑटोनोमस रीजन्स होती हैं जहाँ पे वो खुद ही अपना जुडिक्शन एक्सरसाइज करते हैं, दे हैव अ हायर पीपल कोर्ट ओवर देयर. और हियरिंग किन किन तरह से की जाती है या किन किन चीज़ों की जाती है, तो वो जो फर्स्ट इंस्टेंस केसेस होते हैं या फिर एपेलेट केसेस होते हैं जो कि इन्वॉल्व करेंगे सिविल, एडमिनिस्ट्रेटिव और क्रिमिनल, तीनों ही प्रकार के मैटर्स की सुनवाई की जाती है. दैट वाज द सेकेंड वन. एंड द थर्ड वन इज़ इंटरमीडिएट पीपल कोर्ट. तो इंटरमीडिएट पीपल कोर्ट क्या होता है? इट इज़ लोकेटेड इन द म्यूनिसपैलिटी, जैसे हम लोग के यहाँ नगर पालिका या नगर निकाय होते हैं. हैज़ ओरिजिनल एंड एपेलेट जुरिडिक्शन इन क्रिमिनल, सिविल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव केसेस. द लास्ट वन इन द line is basic people courts. So basic people courts located in the rural counties or municipal districts have original jurisdiction in certain civil, economic, administrative and criminal cases. Some basic level courts have established people tribunals to deal with minor civil and criminal matters. तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि बेसिक पीपल कोर्ट जो होते हैं वो रूरल काउंटीज़ में यानी विलेज एरियाज़ में या जो ज़्यादा विकसित सिटीज़ नहीं हैं वहाँ के, वहाँ पे लोकेटेड होते हैं, या फिर म्यूनिसिपल डिस्ट्रिक्ट्स जिनके पास ओरिजिनल जुरिडिक्शन है अपना. और इसमें किन किन मुद्दों पे सुनवाई होती है? मैटर्स वही हैं, सिविल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और क्रिमिनल. क्रिमिनल लॉ एंड क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ इन चाइना. द क्रिमिनल लॉ इज़ पब्लिश्ड in 1997 based on criminal code, which was first adopted in 1979 and was amended several times later, with the latest being amendment number 8
adopted on 25th February 2011, either by the NPC or its standing committee. Key provision of the legislation law of PRC is article which states that only the national law passed by NPC can criminalize behavior. The harshness of criminal law is under heavy criticism, especially in instance on capital punishment for many crimes. China accounts for the bigger number of criminals executed in world per year, which has raised the concern among the different human rights groups and international organizations. तो चाइना का जो कैपिटल पनिशमेंट रेट है वो सबसे ज़्यादा है पूरी दुनिया में विथ रिगार्ड टू पर ईयर डाटा, और इसी वजह से ये चिंता का विषय है वर्ल्ड ओवर के लिए, ह्यूमन राइट्स ग्रुप के लिए. द क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ प्रोवाइड्स फॉर द डिफेंस ऑफ द एक्यूज्ड. However, due to the structure of PRC's government and its organs, there is little balance in cases where it should be theoretically be present. तो इसी वजह से imbalance create हो रहा है in the dealing of various criminal cases in China. Here you can see a pictorial representation of court system structure in China. तो आप टॉप पे देख रहे हैं Supreme People's Court. Then maritime court is there, military court is there underneath. Then you have the major higher people court, और higher people court के नीचे होता है intermediate people court, और end में in the lower in category is basic people courts. You also have railway court and forest court etc. In extra under the Supreme People Court. Talking about the structure of courts of China, according to the Constitution of the People's Republic of China, Chinese courts can be classified as follows. The first one is Supreme People Court, SPC. At the highest level is the Supreme People Court, SPC in Beijing. ये बेजिंग में situated है. The Premier Appellate Forum of the land, which supervises the administration of justice by all subordinate local and special people courts. It is the court of last resort for the whole People's Republic of China, except for Macau and Hong Kong. Then second in order comes the local people's court. These are the courts of first instance and handle criminal and civil cases. These people courts make up the remaining three levels of the court system and consist of the first one higher people court, the second being intermediate people courts, and the third is basic people court. तो लोकल पीपल कोर्ट में ये तीन कैडर होते हैं. Now there are special courts या courts of special jurisdiction also. These are special courts that are comprised of either military court of China, which is related to military division, railway transport court of China, railroad transportation, and maritime court of China, water transportation, and there is even a fourth one, that is a forest court, forestry. These courts hear cases of counter revolutionary activity, plundering, bribery यानी कि जो रिश्वत दी जाती है, sabotage or indifference to duty that result in severe damage in military facilities, workplace, government property, or threaten the safety of soldiers or workers. Military courts make up the largest group of special court and try all treason and espionage cases. People procuratorate. There is a parallel hierarchy of prosecution officers called people procuratorate. The highest being the Supreme People's Procuratorate. Apart from this, Hong Kong and Macau have separate court systems to their historical status as British and Portuguese colonies respectively. Now talking about the people courts, procuratorates and public security. Strictly speaking,
China's judicial system only refers to People's Court system. According to Criminal Procedure Law of PRC, during the criminal proceedings, People's Court, People's Procuratorate, and Public Security Organ shall perform their tasks respectively as well as cooperate. In this meaning, People Procuratorate and Public Security Organ both execute judicial power, although their judicial function are limited in a very relatively narrow scope. तो ये जो पब्लिक सिक्योरिटी ऑर्गन होता है और पब्लिक प्रोक्यूरेटोरेट होता है, इनके लिमिटेड जुडिशियल फंक्शन होने के बावजूद ये उसका हिस्सा होते हैं पूरी जुडिशियल सिस्टम का. Thus, broadly speaking, China's judicial system institutionally comprises of 3 parts. तो चाइना का जुडिशियल सिस्टम आप समझ रहे होंगे कि 3 हिस्से का होता है, 3 हिस्से से बनता है. पहला पीपल्स कोर्ट, दूसरा पीपल्स प्रोक्यूरेटोरेट सिस्टम और तीसरा है पब्लिक सिक्योरिटी सिस्टम. और पीपल कोर्ट्स में आपको बताया है कि 3 कैटेगरीज होते हैं, हायर पीपल कोर्ट, इंटरमीडिएट पीपल कोर्ट और बेसिक पीपल कोर्ट. Now what are people courts? So they are judicial organs exercising judicial power on behalf of the states. The judicial authority of PRC is exercised by the following: People's Court, local People's Court at various levels, military courts and other special people courts, and supreme people courts. The local people court are divided into basic People's Court, intermediate People Court and higher People Court. You already know this. In the administration of adjudication, the People Court adopt the system whereby a case should be finally decided after 2 trials. तो 2 ट्रायल के बाद केस डिसाइड हो जाना चाहिए, ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एडजुडिकेशन ऑफ पीपल कोर्ट्स में करा जाता है. इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी जजमेंट या अजजमेंट और ऑर्डर्स ऑफ द फर्स्ट इंस्टेंस मस्ट कम फ्रॉम लोकल पीपल कोर्ट एंड अ पार्ट में ब्रिंग एन अपील ओनली वंस to the people court at next higher level. The people procuratorate may present a protest to people's court at the next higher level. So इसका मतलब जो जजमेंट होता है या ऑर्डर होते हैं फर्स्ट इंस्टेंस में, वो आने चाहिए लोकल पीपल कोर्ट से और एक कोई हिस्सा उसका अपील कर सकता है एक ही बार केवल पीपल कोर्ट में, जो कि नेक्स्ट हायर लेवल का है. जो पीपल्स प्रोक्यूरेटोरेट होता है दैट में फाइल अ प्रोटेस्ट, वो प्रोटेस्ट कर सकता है, विरोध कर सकता है पीपल कोर्ट का नेक्स्ट हायर लेवल पे. जो जजमेंट होते हैं या ऑर्डर्स होते हैं फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ लोकल पीपल कोर्ट्स के एट वेरियस लेवल बिकम लीगली इफेक्टिव इफ when the prescribed period for appeal no party makes an appeal. तो जो जजमेंट होते हैं वो लीगली इफेक्टिव हो जाते हैं अगर कोई भी पार्टी अपील नहीं करती है. एक प्रिस्क्राइब पीरियड होता है जिसके बाद वो लीगली इफेक्टिव हो जाता है जजमेंट. तीसरी बात है जजमेंट एंड ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट ऑफ द सेकेंड इंस्टेंस शैल बी सीन एज फाइनल डिसीजन. तो फर्स्ट इंस्टेंस के लिए फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में बताया गया है. थर्ड पॉइंट कह रहा है कि जो जजमेंट और ऑर्डर्स हैं अगर सेकेंड इंस्टेंस के हैं तो दे विल बी कंसिडर्ड एज फाइनल डिसीजंस ऑफ द केस, वो फाइनल डिसीजन बन जाते हैं. हाउएवर एनी जजमेंट एंड ऑर्डर रेंडर्ड बाय द सुप्रीम पीपल्स कोर्ट एट द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस shall become immediately legally effective. तो अगर कोई जजमेंट और ऑर्डर सुप्रीम पीपल कोर्ट जो होता है वो करता है प्रेजेंट एट द फर्स्ट इंस्टेंस कोर्स ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, तो वो वहाँ पे इमीडिएटली तुरंत ही लीगली इफ़ेक्टिव हो जाते हैं.
The collegial panels are the basic units of each court. They are not permanent bodies but organized to adjudicate individual cases. तो collegial panels जो होते हैं वो temporary bodies होती हैं जो कि individual cases को adjudicate करने के लिए बनाई जाती हैं. A collegial panel is composed of 3 to 7 judges, the number of which must be odd. तो odd number इसीलिए रखा जाता है इन नंबरिंग में जो पैनल्स होते हैं ताकि कोई फाइनल डिसीजन निकल आए. अदरवाइज़ अगर इवन नंबर आप रखोगे तो मे बी कि इवन आउट हो जाए दोनों ही जो पूरी जजेस की मेजॉरिटी है, आधे इधर हो जाएं आधे इधर हो जाएं और कोई निष्कर्ष निर्णय ना हो पाए. तो देयरफॉर नंबर इज ऑलवेज केप्ट एज ऑड. हायरार्की ऑफ कोर्ट्स इन चाइना. The Supreme People Court is the highest judicial organ of the state. The President of Supreme People's Court is elected by NPC and its standing committee. तो Supreme People Court का जो जज है, प्रेसिडेंट है, वो कौन, जज नहीं, प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट करता है, वो NPC इलेक्ट करती है और उसकी स्टैंडिंग कमेटी. His term of office is 5 years and he may serve for no more than 2 consecutive terms. तो ये विशेष ध्यान रखना है कि जो प्रेसिडेंट होता है उसकी टर्म जो ऑफिस की होती है वो 5 साल की है और वो कॉन्जिक्यूटिवली यानी एक के बाद एक केवल 2 बार ही प्रेसिडेंट रह सकता है. The NPC Standing Committee appoints and dismisses vice presidents, head and associate head of divisions and judges. The Supreme People Courts has 3 divisions. पहला criminal division, दूसरा civil division and third is an economic division. It may have other divisions as it deems necessary. तो अगर आवश्यकता पड़ती है तो और भी divisions बनाए जा सकते हैं. Generally it has jurisdiction over the following cases. तो इनका jurisdiction कहाँ कहाँ तक होता है. Cases of first instance which are assigned by laws and other cases that is considered it should ट्राई इटसेल्फ. तो सुप्रीम कोर्ट जिन केसेस को उचित मानता है कि वो उसे ट्राई करने चाहिए उस पर उसका जुरिडिक्शन होता है और जितने भी केसेस ऑफ फर्स्ट इंस्टांस होते हैं जो कि बाय लॉ असाइंड है उनके ऊपर भी उनका जुरिडिक्शन होता है. साथ ही अपील्ड एंड प्रोटेस्टेड केसेस जो होते हैं अगेंस्ट जजमेंट्स, जजमेंट के अगेंस्ट में विरोध में प्रोटेस्ट और अपील वाले केसेस होते हैं और अदर ऑर्डर्स के अगेंस्ट में जो अपील या प्रोटेस्ट की गई हैं बाय द हायर पीपल कोर्ट एंड स्पेशल पीपल कोर्ट, इनकी भी सुनवाई सुप्रीम पीपल कोर्ट करता है. तीसरा, द प्रोटेस्टेड केसेस फाइल्ड बाय सुप्रीम पीपल प्रोक्यूरेटोरेट. तो ये जो सुप्रीम पीपल प्रोक्यूरेटोरेट फाइल करता है प्रोटेस्ट, उनकी भी सुनवाई सुप्रीम पीपल्स कोर्ट करता है. इट सुपरवाइजेज द वर्क ऑफ लोकल पीपल कोर्ट at various level as well as the special courts. The Supreme People Court gives interpretation on questions concerning a specific application of laws and decrees in judicial proceedings. In reality, the practice of interpreting laws and decrees by Supreme People's Court has developed in recent years. तो जो इंटरप्रेट करने की जो प्रथा है, जो एक ज़रूरत है, वो अभी अभी चाइना में रिसेंट ईयर्स में ही डेवलप हुई है. To the extent that is called judicial legislation. This was not previously defined in the constitutional law. तो पहले इनके यहाँ यह प्रावधान नहीं होता था. However, the legislation does require guidance in order to fill gaps and to solve conflicts and some vagueness among the laws, so the effective enforcement can be carried out by judicial branch. तो आवश्यकता ज़रूर होती है इस तरह की जुडिशियल लेजिस्लेशन की ताकि जो कमियां हैं वो पूरी की जा सके, गैप्स को फिल किया जा सके. अगर कोई विरोधाभास होता है तो उसको सॉल्व किया जा सके. अगर कोई वेगनेस है जिसका एक्सप्लेनेशन नहीं है तो उसको भी ठीक करने के लिए जुडिशियल लेजिस्लेशन की अति आवश्यकता है. द हायर पीपल कोर्ट्स आर द कोर्ट्स ऑफ प्रोविंसेस, ऑटोनोमस रीजन, म्यूनिसिपैलिटीज़ डायरेक्टली अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट. The internal structure is almost the same as that of Supreme People Court according to the definition of organic law. A higher people's court deals with cases of first instance.
assigned to laws and decrees, cases of the first instance transferred from People's Court, the next lower level cases of appeals and of protest lodged against judgment and orders of People's Court at the next lower level, and cases of protest lodged by People's Procuratorate. The intermediate people courts are the courts established in capital or prefectures is in the province level. The scope of jurisdiction by the intermediate people court covers cases of first instance assigned by laws and decrees, cases of first instance transferred from basic people courts, and appealed and protested cases from the lower court. Basic people courts are at the lowest level and are normally located at the court, at the municipal districts and autonomous counties. A basic people court may set a number of people tribunal according to the conditions of locality, population and cases involved. A people's tribunal is a component of the basic people court, and its judgment and orders are considered as judgments and orders of basic people court with the same legal effect. तो पीपल ट्राइब्यूनल जो होता है वो भी इसका कॉम्पोनेंट है और इक्वलेंट होता है बेसिक पीपल कोर्ट के, और उसके लीगल प्रभाव भी एक ही जैसे होते हैं. इन प्रैक्टिस अ ट्राइब्यूनल of nature is often set in big towns or townships where there is a concentrated population. जहाँ बहुत घनी आबादी होती है वहाँ पे ट्राइब्यूनल सेटअप होते हैं. As defined in the organic law, the basic people code adjudication all criminal and civil cases of first instance except where the law provide otherwise. Besides trying cases, a basic people court is also responsible for settling civil disputes, handling minor criminal cases that do not require forum handling, and directing the work of the people mediation committees. The special courts include military courts, railway courts, maritime courts, even forest court. The military court that is established with the PLA is in charge of hearing criminal cases involving servicemen. This is a relatively closed system. The railway and transport courts deal with criminal cases and economic disputes relating to railways and transportation. अच्छा, इसको क्लोज सिस्टम इसलिए कहा गया है क्योंकि ये इसमें कोई लेवल नहीं होता, ये डायरेक्ट बस कोर्ट्स होते हैं. The railway and transport court deals with criminal cases and economic disputes relating to railways and transportation. The 5 maritime courts have been established by the Supreme People Court at the port cities of Guangzhou, Shanghai, Qingdao, Tianjin, and the Lion. These courts have jurisdiction over the maritime cases and maritime trade cases of the first instance, including any other disputes of this category, taking place between the Chinese and foreign citizens. The organization and enterprises, nevertheless, they have no jurisdiction over the criminal cases and other civil cases belonging to the ordinary courts. The higher people court in locality where the maritime court is located shall have jurisdiction over the appeals against the judgment and order of the maritime courts. Now, People's Procuratorate under Article 129, China People Procuratorate are state organs for legal supervision. To define the task, function and organization of People's Procuratorate, the Standing Committee of the 6th NPC adopted at its second session on September 2, 1983, the Organic Law of People Procuratorate. Article 5 of Organic Law states the functions and powers of the People's Procuratorate at all levels of the following. Now, to exercise procuratorial authority over cases of treason, cases involving acts to dismember the state and other major criminal cases, severely impeding the unified enforcement of state policies, laws, decrees, and administrative orders,
Then to conduct investigation of criminal cases handled directly by themselves. Then also to revive cases investigated by public security organs and determine whether to approve arrest and to prosecute on the exempt of prosecution. To exercise supervision over the investigative activities of public security. Orders to determine whether their activities conform to the law. To initiate the public prosecution of criminal cases and support such prosecution. To exercise supervision over the judicial activities of the People's Court, ensure they conform to law. To exercise the supervision over the execution of judgment and orders in criminal cases and over the activities of prisons, detention houses, etc. Talking very quickly, there are also Supreme People's Procuratorate. The Constitution defines it as the highest procuratorial body. Unlike Supreme People's Court, it leads people procuratorate at lower levels to safeguard the independence of the system. And last is the Local People Procuratorate. The Local People Procuratorate apply the system of dual leadership and the principle of democratic centralism. So guys, this is the whole notes. You can just pause and read it out. The video is getting long, so I need to close it off now. The content is all covered. So I hope this video will be of help to you in your studies. Keep studying, stay safe, and God bless you all.